अरे नहीं 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 माय फ्रेंड्स, हवा में भांग नहीं मिलाया है मैंने। हवा में आपको यहाँ पे दिखाया है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का न्यू बिल्डिंग। यस, दिस इज़ द न्यू बिल्डिंग फॉर द 23 बैच for 4 different departments. The front building, what you can see, this is for School of Economics. Then you will have mathematics, MBA, management studies, and statistics. The 4 building. Today we are going to see the inside tour. So chalo guys, let's see and let's explore with me. And one more thing I must tell you, this video is taken by Sujit, my friend. He is doing MBA PhD. So thank you Sujit for this video. So let's see the building inside. अभी यहाँ ऑटोमेटिक लाइट लगा हुआ है. दिस लाइट यू कैन सी ऑटोमेटिक. द मोमेंट यू विल मूव ऑन, ऑटोमेटिकली लाइट विल बी ऑन, एंड इफ यू leave that place, light will be automatic off. So it's now almost 6 o'clock evening time. You can see the sun rays are coming and everything is so beautiful. ओके, सो मेस्मराइजिंग, वेरी फैंटास्टिक बिल्डिंग. कोई भी इस बिल्डिंग को देख के आना चाहेगा कि आई मस्ट ज्वाइन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद. एंड सच ए नाइस लोकेशन यार. मैं तो मतलब क्या बताऊँ, मुझे तो मन कर रहा है मैं फिर से मास्टर्स में एडमिशन ले लूँ. और यहाँ पे एक सेमिनार हॉल है, ये कॉन्फ्रेंस हॉल होगा शायद, कॉमन होगा, अराउंड 400 कैपेसिटी का होगा. यह 3 to 400. AC वगैरह लगेंगे यहाँ पे, चेयर लगेंगे, डिजिटल बोर्ड लगेंगे, प्रोजेक्टर्स लगेंगे, देयर विल बी सिटिंग चेयर एंड ऑल एवरीथिंग. सो almost 1.5 months it will take. Your class will begin by end of July, so by that time everything will be ready. Okay guys, so you can see the how beautiful यार it looks. I'm unable to think कि क्या यार इंडिया में है really. यार इंडिया में लग ही नहीं रहा है. Yes, this is the inside building of University of Hyderabad, and in fact people who are watching and who are staying in University of Hyderabad, I think they were also unknown about it. Such a nice view. Oh my god, what a place यार. So I request you people, do all your efforts for the admission in PhD, PG, CUET, UG, and do join University of Hyderabad. This is just one part of building. I will keep sharing some other portion of building. You will think, oh my god, what a nice infrastructure you have. Like this, University of Hyderabad, more than 10 new buildings in last 2-3 years they got. And I will try to keep sharing. Thank you guys. Thank you for love. Chalo, bye bye. Take care guys. Please subscribe.